Hello and welcome to my channel. I'm Madhurima Sharma and today I'm going to talk about sampling. So we will know what are the types of sampling, what is the process of sampling. Okay, so before we will move to the sampling process and the types of sampling, the two most important thing in a sampling is the population and a sample. A population is an entire group that you want to draw conclusion about, and a sample is a specific group that will collect data from the size of the sample, and it is always less than the total size of the population. So in this figure you can see the population is a large number of people from which we have to draw the sample, because we cannot study the entire population of a country, population of a city, population of a state. So when we have to do research, we cannot study whole population, or we cannot study each and every individual. So we need to draw sample for our study, which is the actual representative of the population. So sampling is a method that allows to get information about a population based on statistics from the subset of the population, that is sample, without having to investigate every individual. So about the for the population, or about the population, we need to draw the sample from the population, and it is smaller in number, lesser in number as compared to the population. Sampling is done to draw conclusion about population from sample, and it enables us to determine a population characteristics by directly observing only a portion or a sample of the population. So why do we need sampling? Selecting a sample requires less time than selecting every item in a population. Sample selection is a cost efficient method. Analysis of sample is less complicated and more practical than an analysis of an entire population, as the number of this sample is less as compared to the population. So it requires less time, it is cost efficient method, and it is less complicated and more practical as compared to the entire population for the study. Types of sample. So sampling is of two type: probability sampling technique or probability sampling, and non-probability sampling. So in probability sampling, each and every element of a population has an equal chance of being selected, and probability sampling gives us the best chance to create a sample that is a truly representative of the population. So here each and every element has an equal chance. In non-probability sampling, all elements do not have equal chance of being selected. Consequently, there is a significant risk of ending up with a non-representative sample which does not produce generalizable result. So it is not possible to draw the sample from the population in by using only probability sampling. Maybe there is some problem arises, maybe just because of less number of population we need to use the non probability sampling also. So maybe there is a significant risk, but sometimes it actually helps the researcher. So here in this image you can understand the difference between the probability and a non-probability sampling. In probability sampling, each and every element has an equal chance of being selected in a sample, but in non-probability sample, few element has the chance to get selected in a sample, and it totally depends upon the researcher wish. So the sampling techniques, the types of sampling techniques and their subtypes. So probability sampling techniques के types हैं: simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling and multi-stage sampling. Non-probability sampling के types हैं judgmental, quota, convenience and a snowball sampling. So we will discuss one by one. So types of probability sampling. First is simple random sampling. As the name suggests, each and every individual is chosen entirely by chance and it is randomly selected. Each member of population has an equal chance of being selected. In image you can see the sample containing the elements from the population. It is in a random way, like
2 is selected, then 13 is selected, then 18 is selected, 6, 10. So randomly from the population the sample is selected. Next is systematic random sampling. So here first individual is selected randomly and others are selected using a fixed sampling इंटरवल. दैट्स वाई इट्स नेम इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. तो पहला एलिमेंट जो हमने रैंडमली थर्ड सेलेक्ट कर लिया, मे बी 7 भी कर सकते थे, 9 भी कर सकते थे, 15 भी कर सकते थे. देन सिस्टमैटिकली हमने 3+4 कर दिया, मीन्स कि थर्ड के बाद एवरी फोर्थ एलिमेंट. तो 4 क्या 7, 3+4 इज 7, देन 7+4 इज 11. लाइक दिस वी draw our sample like this systematically. Next is stratified random sampling. So first divide the population into subgroup, and this subgroup is called as strata based on the different trait like gender, category, etc. Then we select the sample from these subgroup or strata. Like ये जो हमारा sample है, यहाँ हम लोग randomly select करते हैं, but after डिवाइडिंग दी पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा. लाइक हमने रेड को पहले रेड के साथ पूरा डिवाइड कर दिया, देन हमने येलो को किया, देन ग्रीन, देन ब्लू. अब इस स्ट्रेटा से, हर एक स्ट्रेटा से हम लोग एक एक सैम्पल या दो दो सैम्पल जो भी है रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो वन मोर एग्जाम्पल इन दिस इमेज यू कैन सी. यहाँ पे 3 स्ट्राटा है, हमने पॉपुलेशन को 3 स्ट्राटा में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो स्ट्राटा 1 में ये इमोजी है, स्ट्राटा 2 में ये इमोजी है, स्ट्राटा 3 में ये इमोजी है, और इसको कलर से भी डिवाइड कर दिया गया ताकि समझ में आए कि ये स्ट्राटा है. देन फ्रॉम ईच स्ट्राटा रैंडमली हमने एक एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया. तो ये हमारा सैम्पल हो गया in a stratified random sampling. Next is the cluster sampling. So we use the subgroup of population as a sampling unit rather than the individual. हम लोग यहाँ पे एक subgroup cluster को हम लोग as a sampling unit use करते हैं, ना कि individual को. The population is first divided into subgroup known as cluster, and the whole cluster is randomly selected to be included in a study. तो यहाँ पे क्या किया ना, हमने पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड किया था. 5 क्लस्टर में वी हैव डिवाइडेड. देन हमने हर एक क्लस्टर से हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं किया, हमने एक कंप्लीट क्लस्टर को ही अपना सैम्पलिंग यूनिट बना लिया. सो दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. एज द नेम सजेस्ट मल्टी स्टेज, मतलब यहाँ पे मल्टीपल सैम्पलिंग divides larger population into stages to make sampling process more practical. तो stages होता है, multi stage होता है. A combination of stratified sampling or a cluster sampling and simple random sampling is used. Like population है, फिर उसको मैंने cluster में divide किया, फिर cluster को फिर हमने strata में divide किया, फिर again हमने उसको cluster उससे select किया, then हमने item select किया. तो इस तरह से हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक हमें सर्वे करना ऑन अ ड्रग यूज इन अ हाई स्कूल, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 स्टेज सैम्पलिंग ले सकते हैं. लाइक फर्स्ट हो गया जोग्राफिक एरिया. फॉर एग्जाम्पल हमने दिल्ली को ले लिया जोग्राफिक एरिया, देन फॉलोड बाय अ हाई स्कूल विद इन दोज एरिया. अब दिल्ली में जितने भी हाई स्कूल हैं, तो हम लोग दिल्ली के बाद भी एक और हम लोग सब ग्रुप बना सकते हैं, एक और स्टेप ले सकते हैं. देन हम लोग हाई स्कूल लेंगे, जितने भी हाई स्कूल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर. शायद गवर्नमेंट हाई स्कूल चाहिए या प्राइवेट हाई स्कूल चाहिए. देन अगेन हमने क्या करना है, वहाँ से सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ दो स्कूल. तो इससे हमारा फाइनली इस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से फाइनली हमें पता चलेगा सर्वे ऑन अ ड्रग यूज इन अ हाई स्कूल. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. First is the judgmental sampling. It is also known as selective sampling, and it depends upon the judgment of the expert when choosing whom to ask a question. So judgmental sampling में क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किसको अपना सैम्पल में इंक्लूड करना चाहते हैं. सो वो जो एक्सपर्ट है उस पर डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली अवेबिलिटी पे डिपेंड करता है जजमेंटल सैम्पलिंग में.
Next is the quota sampling. In this type of sampling, we choose item based on a predetermined characteristics of a population. तो ऑब्वियसली रिसर्चर पहले से सोच लेते हैं कि मुझे ऐसी ही पॉपुलेशन से सैम्पलिंग ड्रॉ करना है. The main reason why researchers choose quota sample is that it allows the researcher to sample a subgroup that is great interest to the study. And if a study aims to investigate a trait or a characteristic of a certain subgroup, this type of sampling is an ideal technique. तो यहाँ इमेज पे देखो इतना हमारा पॉपुलेशन है, बट हमारा जो कोटा था, रिसर्चर का जो कोटा है मेल एबव 50, तो हमने ऑलरेडी प्री डिटरमाइन कर लिया कि हमें मेल चाहिए जो कि एबव 50 हो. तो ये हमारा हो गया सैम्पल. नेक्स्ट इज दी convenience sampling. This is perhaps the easiest method of sampling because individuals are selected based on their ability and willingness to take part. तो जो रिसर्चर है उसको जो easily available होगा वो उसी को select करेंगे और उसी से वो डेटा कलेक्ट करेंगे, जो भी उनको रिसर्च क्वेश्चन पूछना है, जो भी डेटा कलेक्ट करना है. तो दिस इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ द individual or an item for the sample. So next is snowball sampling. So existing people are asked to nominate further people known to them so that the sample increases in size like a rolling snowball. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं. तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमारा जो है वो सैम्पल मिलता जाएगा. एक से मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने किसी और का रेफरेंस दे दिया, अब वो तीनों से हमें किसी और का पता चलता है. दिस हमारा जो है सैम्पल साइज इंक्रीज होता जाएगा. सो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज इफेक्टिव व्हेन सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. तो यहाँ रेफरेंस से हम लोगों को सैम्पल मिलता जाता है. दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सैम्पलिंग प्रोसेस. So the sampling process is, first we have to identify and define the target population, then select the sampling frame, then choose the sampling method, then determining the sampling size and collect the required data. So one by one we will discuss the process, the steps of the sampling. So in first step, the first step is the sampling process is to clearly define the target population. Whatever our target population is, हमने अपना target population decide कर लिया. Second step is sampling frame. It is the list of item or a people forming a population from which the sample is taken. तो ये population का list है जहाँ से हमें sample draw करना है. तो sampling frame क्या होता है? List of item or a people forming the population from which sample is taken. Step 3 हमारा था choosing sampling method. You have to choose the sampling method, probability or non-probability. Generally, probability sampling method are used because every element has equal chance and any person can be included in the sample irrespective of his caste, community or religion. तो probability sampling generally use करते हैं, but it depends on the researcher and whatever the research problem is. Next step is sampling size. Now we have to determine the sampling size. Sampling size is the number of individual or an item to be taken in a sample that would be enough to make inference about the population and with the desired level of accuracy and precision. Larger the sample size, more accurate or our inference about the population would be. तो sampling size है जितना sample हमें चाहिए जो कि एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को, और जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा उतना एक्यूरेट होगा और उतना इजीली वो इन्फरेंस ड्रॉन कर सकेंगे हम लोग पॉपुलेशन का. सो लार्जर सैम्पल साइज इज गुड. नेक्स्ट इज स्टेप 5 में है, वंस द टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पल साइज has been established, the next step is to collect the data from the population. Finally हमें data collect करना है from the sample. Sorry, not the population, it is from the sample. I hope you like this video. Like, subscribe and share,
and please comment if you have any doubt. Thank you so much.